COVID-19 unleashed an unprecedented humanitarian and health crisis. The extraordinary efforts put by frontline workers, including healthcare workers, administrators, social workers, sanitation workers, media, etc., cannot be understated. It is important to recognize and acknowledge their contribution in the fight against the pandemic. Department of Social Work, Aditi Mahavidyalaya, Delhi University, in association with Vishwa Yuvak Kendra, has organized a webinar NGO Meet on the theme Sashaktikaran, Women Warriors in COVID-19. She has the soul of a storm and freedom of the wind. She has eyes like the stars with moonshine within, with the strength of the sea and lightning in her toes. She dances on the breeze of change wherever she goes, hotter than a volcano and deeper than the oceans, a whirling, swirling myriad of feelings and emotions. She's daughter of the earth, primordially inspired. She's water, she's wood, she's earth, she's fire. Good morning. A warm welcome to the Honorable Principal, our respected teachers, our partner for today's event, Vishwa Yuvak Kendra, various other organizations, my juniors, and my fellow students. Greetings to all. NGO Meet is conducted with the aim to connect the students with academicians and professionals. This provides a platform to the NGOs to bring awareness about their initiatives and organization, and helps the students to enhance their skills of networking, funding, planning, organizing, and communicating. It also assists them in learning attributes of professional social work to deal with multifaceted problems of our society. The theme of the NGO Meet for 2022 is Sashaktikaran, Women Warriors in COVID-19, to acknowledge the contribution of those who fought the pandemic up front. The COVID-19 pandemic unleashed an unprecedented humanitarian and health crisis. The war being fought by doctors, nurses, and other healthcare workers, frontline workers, including police officials, sanitization workers, and scientists. From putting extra working hours to save lives and contain the spread of novel coronavirus, getting infected with COVID 19 to staying away from their families and friends, and finding families in their patients to even being ostracized by the society. Frontline and healthcare workers have faced all this in the past year and a half. The theme of the NGO Meet is to acknowledge the contribution of women COVID 19 warriors who did not bat an eye and faced all the challenges head on. The topics for today's panel discussion are frontline female warriors, home workplace stress, increasing challenges in daily life, and agents of change. सशक्तिकरण जो जैसे नाम से ही पता चलता है empowerment. We are talking about the empowerment of women in different walks of life with all strata of our society. Women, as it denotes by our students itself, that women is a full of devotion and determination. And women, corona warriors, are instrumental in all over the world's war against coronavirus. These range from women holding key positions in the government to countless ordinary citizens. We are working as warriors, as health workers, caregivers, innovators, and community organizers during the pandemic. So जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, हम यहाँ पर वीमेंस की एज एन स्टूडेंट हमारा कंट्रीब्यूशन, एज एन टीचर, एज एन स्कूल टीचर, health worker, and as in the part of the different NGOs, we are battling against the coronavirus, and we are giving example to our society how to deal the situation, that situation about which we cannot even not imagine कि ऐसा भी कभी हो सकता है. For a woman, for a school teacher, it is a very tough task. It is very tough to deal handling all the distress call through that difficult time. And then after coming back to their home, they the teachers, the women have to take care of their household activities. The story is same for all the frontline worker, and it was almost very difficult for the doctors and for
all the healthcare professionals who are directly involved in the caring of COVID positive patients. The situation is not normal for the housewife also. Household activities and managing all the household conditions. It is a very tough job. Taking care of all the needs each and every person needs, their children, elderly, mainly who are in pain and who are sick one. It is a major responsibility. And whenever you are working as a housemaker, as a housewife, or as a working woman, that is a different multidimensional responsibility and challenge we are facing. But we shall win. COVID-19 made us realize that each and every woman is the warrior in that pandemic phase. It made us realize that there is a wide scope of empowering the women, although she is already empowered in many ways, but still a large section of our society is still needs to be empowered. And I am very much thankful to VYK and other organizations who are providing such a beautiful platform where we can discuss our and we can share our experience with students and with the different members of the NGOs and different type of the practitioners. Now, I would like to warm welcome to our enthusiastic speakers of the day, Dr. Ruchi Sinha, Associate Professor, Center for Criminology and Justice, School of Social Work, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai; Dr. Renuka Badola, MD Pediatrics, Lady Hardinge Medical College; Ms. Ritu Sharma, Program Officer, Alliance India; and Ms. Shalini Parveen, Professional Marriage Counselor, SPUWAC, Delhi. Now, I would like to warm welcome to all the organizations present here, faculty members of Aditi Mahavidyalaya, and my dear students. Today is a big day and we are feeling very energetic. Preparing for this big day take a lot of time and efforts which the students of Ekta Society along with VYK you have done greatly. I wish you good luck. मैं अपने भाई बहन से अपील करना चाहता हूं, बीइंग एल्डर ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपील करें। तो ये अपील के तौर पर मैं 2-3 बातें रखना चाह रहा हूं कि एक तो जब भी आप कहीं बढ़ें, कहीं जाएं, जब आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी जरूर रखें, क्योंकि ये जो ग्लोबल वर्ल्ड है, नाउ ग्लोबल विलेज की हम बात कर रहे हैं। हर एक तरह के कास्ट हैं, हर एक तरह के रिलीजन हैं, हर एक तरह की सोसाइटी है, हर एक तरह के ज्योग्राफिकल कंडीशन हैं। जो हिमाचल प्रदेश में अच्छा हो सकता है वो राजस्थान के बाड़मेर में शायद वो प्रोजेक्ट अच्छा से नहीं चल सकता। जो जम्मू कश्मीर में जो प्रोजेक्ट अच्छा से चल सकता है वो हो सकता है कि गैबन में अच्छा, दक्षिण अफ्रीका में अच्छे से नहीं चल सकता। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कंटेक्स्ट क्या है, व्यक्ति की जरूरत क्या है, और अगर किसी प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी विशेषता है तो नीड असेसमेंट हम भूल जाते हैं, और आजकल तो बहुत भूलने लगे हैं। तो हमें नीड असेसमेंट से लेकर इम्पैक्ट असेसमेंट तक की जब हम बात करेंगे तो उसमें सारे चिन्हित चीजें आएगी, और उसका स्ट्रेटेजिकली हमें इंटरवेंशन करना चाहिए, मिड टर्म इवेल्युएशन करना चाहिए, और अपने आप को ये समझना चाहिए कि हम इस कार्यक्रम को क्यों कर रहे हैं और इससे बेनिफिट अल्टीमेटली किसका है। एक तो मैं ये बताना चाहता था कि एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज द की। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि हम फिलैंथ्रोपी मोड से डेवलपमेंट मोड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आसान नहीं होता है। जब हम चैरिटी वर्क कर लेते हैं तो सस्टेनेबिलिटी आसान नहीं होता। इसके बीच कैसे सामंजस्य बैठाएं, ये हमारे प्रोफेशनल का कार्यशैली होनी चाहिए, जिससे कि हम आने वाले समय में सोसाइटी का सुधार कर सकें और उसमें कुछ अपनी योगदान दे सकें। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी यदि मूलभूत चीजें होगी तो वो होगी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी केवल कार्यशैली की नहीं बल्कि व्यक्तित्व की भी होनी चाहिए, बात विचार की भी होनी चाहिए, समर्पण भावना की भी होनी चाहिए। यदि हम इस चीजों से दूर रहेंगे तो कम्युनिटी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो हमें ये चीज देखना पड़ेगा कि जहां हम प्रोजेक्ट इंटरवेंशन करने जा रहे हैं, क्या हम उनके लायक फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। तो ये चीजें हम थोड़ा सा समझाना चाह रहे थे अपने साथियों से। जब मौका लगेगा तो हम फिजिकली इन चीजों की बात करेंगे, चर्चा करेंगे।
First of all, I would like to welcome all our panelists. मेरे टीचर्स ने, मेरे जो मेंटर्स हैं, उन सभी ने बात रखी है कि बीइंग अ वुमेन क्यों जरूरी है एक महिला का सशक्तिकरण। और जब कोविड-19 जैसा पेंडेमिक हम लोगों को हर रूप में कुछ ना कुछ सिखा रहा है आज भी, तो सशक्तिकरण अपने आप में एक महिला का सशक्त होना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट है और एक बहुत ही जरूरी एक मुद्दा है जिस पर हम कभी भी आंख बंद नहीं कर सकते, अपने कान बंद नहीं कर सकते या हम अपनी आवाज को रोक नहीं सकते। और इसी के साथ साथ मैं बस एक ही फैक्ट को जोड़कर अपनी राय रखना चाहूंगी कि इस थीम को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी कि आज इस पेंडेमिक ने हमें सिखाया कि किस तरह हमें जेंडर न्यूट्रल होना जरूरी है, कि एक जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी की क्यों आवश्यकता है। क्योंकि अगर आई एम श्योर हम सभी यहाँ पे वर्किंग भी हैं और होम मेकर भी हैं और महिला हैं साथ साथ, तो हमें समझ में आ रहा है कि हम अगर फोर फ्रंट पे आज बैठे हुए हैं तो हमारे प्रोफेशनल फ्रंट पे और हमारे पर्सनल फ्रंट पे हमें कितना सपोर्ट मिला है। दैट्स बिकॉज वी समवेयर बिलोंग टू अ जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी। ठीक है, लड़ रहे हैं, चीजें क्लियर हो रही हैं, क्या मतलब है जेंडर न्यूट्रल होने का वो समझ में आ रहा है और आगे भी हमें समझाना है, क्लियर करना है। In this COVID-19 pandemic, I look at women in central role and I feel a sense of pride. In the front line as doctors, nurses, counselors, and social workers. In essential jobs, supporting everyday needs. We have seen large number of women supported the whole world by making the masks, as well as in care and domestic work, at home, at other fronts for the well-being of the family and the society. Women were there for the psychosocial support to the whole family, whether it is the husband with no job or less earning or no earnings, children in online education mode, ensuring entertainment to the children because there was no outside play. So she was working day and nights, and this is not enough. We have seen many cases where the women lost their life partners, children, biggest emotional trauma, but still managed and coped with all the stressors and stood as a role model for the family. She is the warrior. Dear friends, with this, I invite our esteemed panelist, our esteemed and reputed doctor, Dr. Renuka Baloda. She's an MD Pediatrics, Lady Harding Medical College. Good morning, Dr. Renuka. Hi, everyone. How are you, ma'am? I'm fine. First of all, a great thanks to you all for inviting me and for giving me the opportunity to share my feelings with you. It is our pleasure, ma'am. Thank you so much for giving the consent to be a panelist here. Ma'am, I would like to ask you that there was the time when first wave were there. We were feared. We were struggling to protect ourselves from the coronavirus. और फिर सेकेंड वेव आया जहां हम और भी ज्यादा डर गए थे, बहुत इमोशनल ट्रॉमा था, एक टर्मोइल का फेज था। थर्ड वेव जो अभी चल रहा है, एज अ डॉक्टर आपके क्या चैलेंजेस थे, राइट फ्रॉम वेयरिंग अ पीपीटी किट और taking other precautions to take care of self and the patients? It has been many months since this coronavirus has created a havoc on this globe. And as a doctor, during all the three waves, my experience has been extremely different. Like during the first wave, we all were very much scared. During the first wave, because it was the pandemic, we didn't knew what is our management plan, how to deal with these patients. So that was the biggest challenge to us. And obviously wearing a PPT has remained a big challenge. Like we used to wear PPT for 6 to 12 hours, but wearing a PPT even for 2 to 3 hours is extremely a difficult task. So that was the big challenge. Then during the second wave, because of our past experiences, we knew what is the treatment, how to deal with these patients. But we faced two challenges basically.
The first, which we had lack of resources because so many patients were affected. So we had lack of oxygen, we have lack of ventilators. And I think for each one of us, it was the worst wave. Each, like in my family also, all the members were affected. Many of the residents were affected, and we have seen many deaths in our hospital during that wave. So during that wave, yes, humanitarian crisis also. And then during the third wave, I think we got acclimatized. We knew what to do. But during the third wave, the cases were mildly symptomatic only. All were recovered well. So the challenges has been different during all the three waves. Ma'am, because you have been working in pediatric department from a long time, इस बीच हमने कोविड से रिलेटेड सुना कि मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम MIS करके जो है बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे, उनका मल्टी ऑर्गन सिस्टम कहीं ना कहीं परेशान कर रहा था, जो पोस्ट कोविड इफेक्ट जनरली कहा गया. आपका कोई एक्सपीरियंस इस तरह का रहा जहां पेरेंट्स का इमोशनल आउटबर्स्ट रहा हो एंड यू हैव डेल्ट विद इट? किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर? Actually, multi-system inflammatory syndrome is a post-COVID effect. Like after recovering from COVID, it occurs in children from 1 to 19 years of age, including adolescents. And what happens in this, the patient presents with fever of more than equal to 3 days, and any of the two signs like rashes all over the body, redness of the eyes, then heart involvement, bleeding, falling blood pressure, and gastrointestinal symptoms like vomiting and diarrhea. So we have a treatment of this disease also, but this disease is actually very much fatal in children. If it is diagnosed early, then it can be treated appropriately. We have treatment options which include immunoglobulins and steroids like methylprednisolone. But if the treatment is delayed, then it is fatal in children. So during our COVID duties, we have seen many patients who were diagnosed with the syndrome, MIS-C, and in my hospital, we have faced actually verbal violence. But in other hospitals like LNJP, who were dedicated COVID hospitals, their doctors have faced physical violence too after the mortality of the patients. It's extremely difficult to counsel them, to satisfy them. I welcome you, Dr. Ruchi. In fact, it is a glad moment for all of us to introduce here. Dr. Ruchi, I feel connected with you because I'm also an academician, and I would like you to share your experiences with us as an academician, the challenges which you have faced, the difficulties, especially in the initial phase, and even nowadays also. Over to you, ma'am. Coming back to social workers, yes, I think we are the invisible frontline workers. Because frontline में रहते हुए भी हम backdrop में ही रहते हैं, and we don't attempt to come to the focus because social worker का एक ही नारा रहता है, काम चलता रहे, लोग बचते रहे, और काम हमारा ऐसा रहे कि लोग enable होते रहे. So with that Jasba, we have moved forward, and yes, the first wave was very, very challenging because as you correctly pointed out, information nahi thi. And I think the only place where we social workers चूक कर गए कि वर्ल्ड ओवर जब ये चल रहा था, हम लोग वर्ल्ड का तो नजारा देख रहे थे, but we failed to build systems so that we could have responded it. Social workers could have built that system, which is a learning that I think we should take away from here. And once it hit, we started responding. So I think most social work departments and schools and centers, they started responding in terms of, लोगों के पास food नहीं था, they didn't have access to rations, or migrants का crisis had hit very closely. So responding to that, or people not getting access to hospitals for reasons other than COVID. So that whole closure of hospitals, getting doctors on board, telling them that, we are losing people to COVID, but we can't afford to lose people due to other reasons. So the responses were multifarious, and as a social worker, we were challenged.
as an educator, as an academician, as a practitioner, as a policy person. So कभी समझ नहीं आ रहा था कि किधर मैं focus करूँ, what should I do? And invariably you became a part of numerous groups. So like artist students had formed respond groups in different parts of the country. So suddenly you would get a call from Bengal, ma'am, so and so's father is stuck in Delhi, please put us in touch with someone in Delhi. So I literally understood what a call center person feels, but slightly a call center in a crisis situation. So we hardly got to sleep. We were like putting people in touch with each other, resource management करने की कोशिश कर रहे थे. And then after almost 2 months of constantly responding, we said this is not the way to respond. Because we were just doing crisis intervention. Whereas what was required was putting systems in place. And that is the time when we got in touch with hospitals, doctors, even ministers where they were responding with every stakeholder. And we said, we want a group, let's make a group. And wherever a question is posted and whoever is responsible, kindly respond. So from immediate response, which is the first wave of concern of a social worker, to building systems in place, we managed it at the end of the first wave. So second wave, we were better organized and better equipped. And Omicron was obviously a complete surprise, but not a surprise. And yes, we faced a lot of pressures from our students. We want to come back to the campus. We can't graduate without stepping into TSS. We don't want to be the batch who never came to TSS. And just when in January we were planning to open up, at that point of time, we had to issue a circular saying that we can't open up. So dealing with their stress of being a batch who will never come to TIS was another concern. So these are, functional systems and responses. Academically, as you correctly pointed out, fieldwork is such an important part of our education. And बिना field पे जाए fieldwork करना और करवाना was completely mind-boggling. And kahin na kahin we had this feeling ki are we hoodwinking the system? Fieldwork ke naam pe kuch to ho raha hai, lekin is that enough? So, and some places where students were being able to go to the field, unke comparison with students who were not going to the field, feeling left out. So every day there was a new challenge. But the only learning is, as we say, the motto of social work is harna nahi hai. Respond karna hai and to come up with something. So we did manage to come up with a situation where we said, okay, we will have 20-80 fieldwork. So 80% online where the situation is very bad. 20% if you don't have elderly in the house, if there are no comorbidities in the house, if you have access to good healthcare system, and if you feel convinced. So ये modalities रखी, फिर उसके बाद one-to-one conversations with our students. And interestingly, what would happen is students are most comfortable talking to you after 10 o'clock in the night. And that boundary of professionalism, that you're not available, that personal time that you had, वो तो था ही नहीं, it's still not there today. So we are 24/7 available to students, and then students calling up and saying, ma'am, I'm going tomorrow, but I'm scared. So then, talking to them and saying that, why are you scared? Ma'am, I'll have to take the metro. So I'm like, okay, do you have any other options? Ma'am, it's too expensive. So I'm like, okay, as a social worker, what decision will you take to keep yourself safe or to meet the aspiration of going to the field? So they're like, ma'am, we want to do both. So we're like, okay, let's do a need analysis. And then let's do a responsible choice. So amongst that talking through, which at times went up to almost 1.5 hours. So, by 11:30, you're off the phone, and then you have your children coming, telling and saying, Mama, I want to talk to you. And you're like, I don't want to talk. So, these are the challenges that we face. But the fact remains that the two things that we learned as social work educators, and I'm sure your colleagues and you yourself must have faced, is that the trust that students have in you as an educator needs to be met with our actions. We cannot afford to be professional when our students are going through a difficult phase.
So the fact that our students were being able to reach out to us and even fight with us, I'm not saying it was all very, smooth running and all. They fought with us, they challenged us, they debated us. Kabhi kabhi gusse mein aake, ma'am, what the hell? You're not even understanding what you're saying. Like, we've heard this also. But next morning we get a very sweet smiley with a message saying that, sorry, ma'am, I think we stepped up, crossed our boundaries. So I think in a nutshell, it was tumultuous, it was confusing, it was challenging, it was difficult. But when I look back, I think we navigated it. And your own loss is never bigger than the other's loss. That is one huge learning that I gained from this personally. Now, to move ahead with our program, I would like to invite Ms. Ritu Sharma. Ritu ji, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि HIV AIDS खुद में एक challenging situation है और उस पर COVID-19. So, in this phase, we would like you to share your experiences in dealing with HIV AIDS cases. And I'm sure you must have had a lot of challenges. So definitely, अभी मैं दो speakers को पहले ही सुन चुकी हूँ, and really the stories from their side was very inspiring as a part of women empowerment. But definitely अगर मैं HIV की बात करूँ, AIDS की बात करूँ, तो हम जानते हैं कि HIV कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो आज भी हमारी सोसाइटी में एक हिडन कम्युनिटी है, जो कि सामने आती नहीं है क्योंकि उसके साथ एक स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन एसोसिएटेड है. तो कोविड का सिचुएशन ऐसा सिचुएशन रहा जो शायद हम सबने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा. स्ट्रेटजीज को बनाना, उनको इम्प्लीमेंट कर पाना उस 2 महीने के लॉकडाउन के बीच में हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था. और ART की अगर मैं बात करूं, HIV की बात करूं, तो HIV से बचने का एकमात्र इलाज जो सारे PLHIVs के पास है वो सिर्फ एक ART मेडिसिन है. और ART मेडिसिन भी एक PLHIV के लिए एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है. Once a person has been started their ART medicine, they have to take the pill till the last day of their life. तो उस टाइम पे the people were very scared. They were not willing to come outside from their home, and even government also asked them to stay at the home. All the hospitals where people were getting the ART were converted into the COVID hospitals. They were restricted to get entry in the hospital, and those who could somehow manage to come to the hospital, they were not allowed because HIV already एक ऐसा disease है जो कि immunocompromised है. शुरुआत में कोविड का फेस हम सबने देखा कि कोई भी कोविड का मेडिसिन नहीं था. लोग अपने अपने अंदाजा लगा रहे थे कि ये मेडिसिन लेंगे तो शायद ठीक हो जाएंगे, वो मेडिसिन लेंगे तो शायद ठीक हो जाएंगे. लास्ट में सिर्फ एक बात निकल कर आई कि अगर आपको HIV, आपको कोविड से बचना है तो आपको सिर्फ अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना होगा, जिसके लिए हम सब ने देखा कि आयुष मंत्रालय ने भी बहुत सारी काढ़ा इन्वेंट किए, बहुत सारी चीजों को इन्वेंट किया जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सके. लेकिन HIV में वो हमारे लिए अगेन एक चैलेंज था क्योंकि HIV ऑलरेडी एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज है. ऑलरेडी वो लोग हैं जिनका ऑलरेडी CD4 बहुत कम है, उनकी इम्यूनिटी बहुत लो है किसी भी प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए. समहाउ उन लोगों का हॉस्पिटल तक आना, ART मेडिसिन को रिफिल कराना, क्योंकि हर महीने पेशेंट को हॉस्पिटल आना होता है, हर महीने उसको अपना रूटीन चेकअप कराना होता है, फिर डॉक्टर मेडिसिन को रिकमेंड करता है. इस दौरान 2 महीने 2.5 महीने कोविड के दौरान कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल तक नहीं आ पाया. दूसरा, उनके पास कोई पर्सनल व्हीकल नहीं था. सारे जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थे सब बंद कर दिए गए थे गवर्नमेंट के थ्रू. तो कहीं ना कहीं वो ART रिफिल कराना हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था. दूसरा, जो लोग घर पर थे, जिन लोगों को डेली पता चल रहा था कि कोविड क्या है, कोविड कैसे इफेक्ट करता है, कोविड कैसे लाइफ के लिए थ्रेटनिंग इफेक्ट है, दे पीपल वर सफरिंग विद दिस साइकोसोशल ट्रॉमा लाइक कि मैं ऑलरेडी HIV पॉजिटिव हूँ, ऑलरेडी मेरी इम्यूनिटी तो है ही एक कॉम्प्रोमाइज्ड फैक्टर में, ऊपर से कोविड अगर मुझे हो गया तो मैं क्या करूंगा. एंड इफ यू सी द डेटा, 40% of the PLHIV are suffering with the comorbidity. Comorbidity means they are having the tuberculosis, they are having the sugar, they are having the BP issues. तो उस दो disease के अलावा, on the top of these 2 disease, having a COVID issue was again a threat for all the PLHIV community. तो वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो LFU लोगों के लिए मेडिसिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि विल फॉर्म अ ग्रुप.
हम लोगों ने अपने फील्ड वर्कर्स को तैयार किया कि यू पीपल विल कलेक्ट द मेडिसिन फ्रॉम द आरटी सेंटर एंड यू विल गेट द and you will go to the home of the PLHIV and you'll distribute the medicines. But again, because of the issue of stigma and discrimination, people didn't disclose their identity to their family member that they are the PLHIVs, that they belongs to the HIV community. तो लोगों ने मेडिसिन लेना भी इनकार कर दिया क्योंकि आप आओगे हमारे घर, हमें मेडिसिन दोगे, हमारा स्टेटस रिवील हो जाएगा एंड विल बिकम अ पार्ट ऑफ द स्टिग्मा। तो वो एक और हमारे लिए चैलेंज रहा कि किस तरीके से हम लोगों को बाहर लेकर आए, किस तरीके से लोग अपने आप को बाहर ला करके मेडिसिन ले पाए। और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग अगर मैं किसी फील्ड की बात करूं तो वो फील्ड वाज द प्रेग्नेंट वीमेन ड्यूरिंग द कोविड-19। The pregnant women were strictly denied from the government that you will stay at the home, you will not come to the hospital until and unless there is an emergency. But as we all know, positive, HIV positive plus pregnancy, it's already a very high situation for any of the women. So they were completely denied, but they were in our observation कि क्या उनको इफेक्ट हो रहा है, क्या उन लोगों को मेडिसिन देनी है, चाहे उनको कैसे मैनेज कराना है, हॉस्पिटल कैसे लेकर आना है। उसके बाद जो सेकंड इशू था दैट वाज द न्यूट्रिशन टू द PLHIV कम्युनिटी, स्पेशली फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन, क्योंकि एक तो ऑलरेडी दे बिलोंग्स टू अ वेरी लोअर इनकम ग्रुप, प्लस 2 महीने तक कोई रोजगार नहीं था, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। दे वर नॉट एबल टू मैनेज इवन अ बेसिक न्यूट्रिशन फॉर देमसेल्फ एज वेल एज देयर बेबी। तो उन लोगों के न्यूट्रिशन को लेकर के एक बहुत बड़ा चैलेंज हम लोगों के सामने आया। इसके अलावा उन लोगों को डेली काउंसलिंग करना, उन लोगों तक पहुंच पाना, एज वी ऑल नो बिफोर टेस्टिंग ओनली द काउंसलिंग इज द पिल फॉर द PLHIV कम्युनिटी, जो उनको साइको सोशल ट्रॉमा से कहीं ना कहीं बाहर निकालने का काम करता है। बट लोग हमारे साथ फिजिकली कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे एंड दे वर नॉट एबल टू यूज द वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। एंड अगर वो दोनों चीज है भी तो दे पीपल आर नॉट वेरी यूज्ड टू ऑफ यूजिंग दिस सच काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स। तो डॉक्टर्स के पास, स्पेशली अगर मैं थर्ड लाइन केसेस की बात करूं, एज वी ऑल नो देयर आर 3 लाइंस इन द HIV, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन। थर्ड लाइन इज द लास्ट लाइन, जिसके बाद तो लाइफ की एक एक्सपेक्टेंसी ही खत्म हो जाती है। बट थर्ड लाइन पेशेंट्स का एक सेशअप ग्रुप होता है जो कि डॉक्टर पैनलिस्ट COE जो हमारे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वहां पर वो 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है उन पेशेंट्स के साथ, जो कि इमीडिएट होता है, क्योंकि आप थर्ड लाइन के पेशेंट्स को डिले नहीं कर सकते। लेकिन इस कोविड ने 2.5 महीने का एक बहुत बड़ा गैप डॉक्टर और पेशेंट के बीच में क्रिएट कर दिया, जिसमें थर्ड लाइन के पेशेंट्स कभी सामने आ नहीं पाए, डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट नहीं कर पाए, और समहाउ हम लोगों ने मैक्सिमम 4 to 5% PLHIV कम्युनिटी के लोगों को खो भी दिया। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि जब तक हम कुछ समझ पाते, जब तक हम बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजाइज कुछ कर पाते, तब तक तो उन लोगों की लाइफ को बहुत बड़ा खतरा ऑलरेडी हो चुका था। तो ये कुछ चैलेंजेस थे हमारे HIV फील्ड के, जो कि COVID-19 के दौरान हम लोगों ने फेस किए। शाहीन जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप क्योंकि स्पेशल यूनिट से जुड़े हैं, काउंसलर्स की पुलिस यूनिट के साथ काम करते हैं, और कोविड जी। समय में हमने बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, घरेलू हिंसा के केसेस सुने। मैं चाहूंगी आप अगर थोड़ा सा ब्रीफ में अगर हमें बता पाएं कि आप ने उसको किस तरह से समझा और किस तरह से निपटाने का कोशिश किया उनको। कोविड-19 एक ऐसा पीरियड लगा हमारे लिए कि जिसमें हमें बहुत अलग तरीके के केसेस सामने आए। हमारे केसेस तो नॉर्मली वैसे तो हमारे घरेलू हिंसा के हमारे पास हमेशा आते ही थे, कोई नई बात नहीं थी। पर अब जो नई बात थी वो सबसे बड़ी बात ये आ रही थी कि कोविड-19 में कुछ शादियां भी हुई थी, और उन शादियों में कुछ लेन-देन को लेकर के या कुछ इश्यूज ऐसे आ रहे थे कि ज़्यादा समय होने की वजह से, एक दूसरे के पास ज़्यादा समय देने की वजह से वो एक हिंसा का रूप लेते जा रहे थे, जिनका ये समझ नहीं आता था कि वजह क्या है। तो वजह वो कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि वजह क्या है और क्या क्यों इस तरीके से हो रहा है। सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था कि हमारी हेल्थ पर, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ ज़रूर थे, पर साथ होने के साथ-साथ हमें बोला जाता था सामाजिक दूरी रखिए, दूर रहिए, बात कम, मतलब एक दूसरे से डिस्टेंस बनाने की कोशिश में। लेकिन वो केसेस जो थे, वो केसेस हम फ़ोन पे देखना, फ़ोन पे हर किसी के पास वो फैसिलिटी नहीं थी कि हम फ़ोन पे हर चीज़ को उनसे बात कर पाते। टाइमिंग कोई नहीं था केसेस का, रात को भी कभी घर पे हैं हम लोग, रात को कभी 12 बजे कोई कॉल आ रहा है, कभी 1 बजे कोई कॉल आ रहा है। तो उसमें ये होता था कि मुझे मेरे साथ मारपीट हो रही है या मेरे साथ कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं,
मैं क्या करूं? तो हम केसेस को डील नहीं कर पा रहे थे, मतलब करने की कोशिश में भी, लेकिन उस चीज को, सिचुएशन को ये नहीं डील कर पा रहे थे कि किस तरीके से इसको निकालें। हम उनको कुछ समझाते थे, बताते थे, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि शायद हमारी बात कम सुनी जा रही है। अब फोन पे सुनना और सामने सुनना बहुत फर्क हो जाता था। तो उनको उनका भी मेंटल प्रेशर बढ़ रहा था और हमारा भी बढ़ रहा था इस चीज से, कि मेंटल प्रेशर में वो लोग अगर अपने मेंटल प्रेशर में ये कहते थे कि आप हमारी बातों को सुन नहीं रहे हैं या आप हमारी बातों को समझ नहीं रहे हैं। हम ये कहते थे नहीं, हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, मगर हम सामने हैं, आपसे दूर हैं, लेकिन उस तरीके से हम किस तरीके से आपको डील कर सकते हैं, आप अपनी मेन सिचुएशन बताइए कि इस टाइम हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो कुछ सिचुएशंस में उनको जैसे खाने की प्रॉब्लम थी, या कहीं पर ऐसा भी लगा कि किसी को पुलिस प्रोटेक्शन की या उसकी बात आती थी, तो उनको वो चीजें बताई भी जाती थी, एक दूसरे से कांटेक्ट भी किया जाता था। फिर हम भी कई बार 100 नंबर वगैरह पे कॉल करके या 112 पे कॉल करके उस सिचुएशन को उनको डील करके बताया है कि क्या करना है आगे, हमें हम क्या करें, हमें भी बताइए कि हम वहां तक पहुंच नहीं सकते, आप उस लाइन में हैं, आप हमारी मदद कीजिए उनके साथ। तो ये चीजें रही हमारे साथ। और सबसे बड़ी आर्थिक तंगी रही, जो पैसों की कमी थी। जो पैसों की कमी की वजह से मोस्टली केसेस ज्यादा आए, जिन्होंने उसने ये कहा कि कैसे खर्चा चलाएं, कैसे करें, क्या करें, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। और वो रोजगार की कमी की वजह से हमारे जो यौन कह सकते हैं, या कह सकते हैं जो पर्सनल लाइफ थी, वो बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। पर्सनल लाइफ में एक दूसरे को स्पेस नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि पूरी फैमिली एक ही घर में थी, और जो टाइम दो लोगों को मिलना चाहिए था, पर्सनल हस्बैंड वाइफ को, वो नहीं मिल पा रहा था। और हस्बैंड वाइफ को टाइम ना मिलने की वजह से वो झगड़े बढ़ते जा रहे थे, मतलब उसमें फिर वो मारपीट का रूप भी ले लेते थे। और बच्चे थे, बच्चों की अलग डिमांड्स थी, उनको लगता था अगर वर्किंग पर्सन है, लेडी वर्किंग है, और वो घर से घर में है, तो उनको ऐसा लगता था मम्मी तो घर में ही है, या लेडी तो घर में ही है, ये काम क्यों नहीं कर रही है घर का, या घर से रिलेट क्यों नहीं हो रही है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा उस टाइम पे इफेक्ट कर रही थी हमें। और हमें भी उन चीजों का सामना करना पड़ा था एज ए पर्सन, एज ए मतलब मैं कहूँ कि मैं भी एक वर्किंग पर्सन हूँ, और बीइंग ए लेडी, तो मुझे भी इन सब चीजों का सामना करना पड़ रहा था थोड़ा बहुत। लेकिन हाँ, ये है कि मेरे साथ वो सब चीज नहीं, क्योंकि मुझे सब जानते थे कि मैं करती क्या हूँ। लेकिन ये है कि जो लोग इस तरह की सिचुएशन में नहीं थे, उनके साथ ये सब चीजें, दिक्कतें ज्यादा आ रही थी। तो मैं ये कहूंगी कि उनको समझाना, सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम जो थी वो थी कि उन तक हम जो कहना चाह रहे हैं वो बात पहुंच नहीं पा रही थी। क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ मूव करते हुए मैं चैट बॉक्स में कुछ आंसर्स क्वेश्चंस देख रही हूँ। एक क्वेश्चन है कि जो हमारे अनसीन वॉरियर्स हैं, आईसीडी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, जो कि रूरल एरियाज में काम कर रहे हैं, कोविड वैक्सीनेशन के लिए वो घर घर जाकर काम कर रहे हैं, उनका काम उतना रिकग्निशन में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर मैं भी ऐड करना चाहूंगी, हमारी जो आशा वर्कर्स हैं बहुत काम कर रहे हैं, इवन सैलरी भी उतना उनको नहीं मिलता है जितना काम वो कर रहे हैं इस पूरे समय में। तो मैं चाहूंगी यहाँ पर रितु जी या रुचि जी अगर इसको आंसर कर पाए कि क्या किया जा सकता है इनके काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए, या कैसे गवर्नमेंट मशीनरी को हम ये दिखा सकते हैं कि कितना काम ये कर रहे हैं और उस तरह से उनको रिकॉग्निशन मिले। I would say that they're not unseen because बहुत सारे गवर्नमेंट मशीनरीज ने उनको recognize किया है, and unfortunately Anganwadi workers had to go on strike also in 2 states of South India. So technically they're not unseen any longer, but yes, what we should do is कि एक minimum जो कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती है WCD डिपार्टमेंट की, वहां पे उनके नाम वो लोग मेंशन करें कि इन्होंने, बिकॉज यू विल सी अ लॉट ऑफ न्यूज फुटेजेस कि आंगनवाड़ी वर्कर्स या पीएचसी वर्कर्स किस डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में जाके वैक्सीन अब लगा रहे हैं दूर दराज इलाकों में, इन रूरल एरियाज, वेदर यू लुक एट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेदर यू लुक एट द very difficult rural areas of certain states such as Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, you know, where access roads available nahi hai. The minimum the government should एक photo documentation honi chahiye on their website. Second, the district collectors who are already overwhelmed, with the help of NGOs,
should acknowledge, क्योंकि acknowledgement मिल जाता है लोगों को बहुत एक motivation मिलता है. That acknowledgement has to go, and local media, instead of just giving us negative reports that Anganwadi workers are not going, they're not doing this, जहाँ पे एक positive story है वहाँ पे उनको भी highlight करना चाहिए. Basic minimum without infrastructure resource investment ये शुरू किया जा सकता है. There's another question जिसने पूछा है कि what are the responsibility of general public in COVID-19, except staying at home, वो बाकी क्या कर सकते हैं? I'm smiling because मैं often कई बार कहती हूँ कि लोगों के पास common sense होता तो शायद हम कोविड को अभी तक जीत चुके होते. So general public को 3 चीजें याद रखनी है. That WhatsApp forward और ये सब जो अनवेरिफाइड न्यूज है उसको ना बिलीव करें, और अगर आपको लग रहा है कि वो रियल है उसको वेरीफाई करो. अगर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू. सेकंड, staying at home is important, but if you can't stay at home, एक सिंपल सी चीज है, आप मास्क पहने, because mask will prevent you from any infection up to 80%, and there Renuka can probably correct me. And wherever possible, like एक Indian mentality होती है कि कोई कहीं जा रहा है तो सबके सब छोड़ने चले गए, या अगर कोई celebration है, it is essential कि हम सब collect हो जाए, आप online meeting कर लो. Very critical close family members can come together, the rest of them can be online. आप अगर बिना मिले किसी की life safeguard कर सकते हैं, I think that is very important. And the last and the most important thing, instead of criticizing everyone and everything around you, आप रोज आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि आपने 2 ऐसी कौन सी चीज दी है to handle the COVID situation. And if you can list 2 things, then criticize the whole world. But if you can't list 2 things, it's like, someone said, don't ask what the country can do for you, ask what you can do for the country. And I think that holds true today. I have enjoyed every minute of this program. I have been in tears occasionally. I have, it is, and the students, they have been really good. But yes, I really want to appreciate the task given to me. I feel totally honored, and I hope I do justice. And I hope I don't miss out anyone. If I do, blame it to my age. So my first thank you and really heartfelt gratitude is to Vishwa Yuvak Kendra. You have always helped us to unfold our dreams and aspirations, and that we want to reach out to our students, but because of our limited resources and our limited tech facility, you have come forward and you have always extended a helping hand. You have not only got us connected to the students, but also to different NGOs in the grassroots level. So a very, very big thank you to Vishwa Yuvak Kendra, but I cannot stop without naming. And I want to firstly thank Mr. Uday Shankar. He has always been such a strong person, and he has been so warm, Each time I meet him, I feel I have so much to learn from him. So you're a big inspiration. And I'm sure I totally agree to your point that you said that we kind of, this NGO Meet and Aditi and Vishwa Yuvak Kendra kind of bridges the, the grooming buds and the persons with experience and exposure. So thank you, sir, that you've always been there. I mean, you're always there at a beck of a call. और वो इतना अच्छा लगता है that you're there. And I feel over the years, I feel that you are, just a very integral part of NGO Meet and Aditi Social Work Department. I also want to thank Mr. Ranveer Singh, Mr. Rakesh Singh, Ms. Mukta Bhardwaj, Mr. Manjuta, Mr. Rajat Thomas, and yes, our dear Apurva Gautam. I mean, Apurva,
You kind of make us so proud, and I appreciate all the hard work that you've put together to get this NGO Meet, into a big successful event. I also want to extend my heartfelt thank you to the panelists. Thank you so much for taking out your precious time. I personally want to thank each one, Dr. Ruchi Sinha, Dr. Renuka, Ms. Ritu, Ms. Shaheen Praveen. And I think, what you shared with us and the experiences that you brought to light, it kind of impacted our minds, and we could totally relate to the sadness, the problems, the suffering of the people. And you kind of individually brought out the different areas where women has really been fighting otherwise also, and more so in the COVID time. And I truly feel the theme of today, it was so, so good. I mean, woman is a warrior. No doubt men are also warriors. I don't believe in that, but that there is any difference between men and women. We all are the same in the heart. And but today's thing, we kind of highlight how woman has been, there's so many problems that they have gone through, and today we were able to discuss that. And I want to thank the department to take up this topic. I also want to give the credit of the whole program to our principal, Professor Mamta Sharma. She is very encouraging and motivating, and she has this humongous energy, and that's really contagious, So we see her every day. She must be in 2-3 programs. I mean, that's so much of a learning, that there's a never stop kind of a energy in her. And we all, I mean, I'm totally, I really feel so good, that there is so much to do, and it just can't be one event of a day. Okay, 2, 3, let's do it kind of a thing. So it's really nice. So her energy level is something that we all can learn from. I really feel obliged, deeply obliged to all our young students. They are our future and they are our ambassadors. And what better ground, where we see all our students back with us as resource persons, as representative of different departments. It really makes us proud. But I still want to thank our current students. I know they've really worked hard, and they've always stood behind the department initiatives and the teachers. So we teachers can't do anything unless they are there. So 3 cheers to Ekta Society. I would be naming only the leaders, but I know the others have also done a lot of work. But I still want to thank Kanika, Nimisha, Kunjika, for all the hard work, Gitanjali, for all the hard work that you have done, and you've been with Rakesh sir all throughout. I also want to thank a few of the other students, and you students really make us proud. So I want to thank Shreya, Pragya, Pujita, Pratha, Nupur, Namita. Thank you for all the energy that you have, and you're there with us, with the teachers, and that really is very encouraging. I also want to formally thank my dear teachers, the team of social work department, the teaching faculty, who have worked every year, year after year. The amount of energy each one puts in, it's the energy that everyone puts in, it's just like enormous. I mean, you don't have to, but we all do it. So thanks to each teacher. And I especially want to appreciate our department family head, Dr. Sunita Behmani, our fieldwork coordinator, Dr. Seema Rani. And I would take this occasion to thank Mr. Rakesh Chaudhary. He's worked tirelessly, and big clapping for him. And I want to also thank the other teachers who've also done a lot of coordination, Ms. Manisha Pal, Dr. Manju Goel, Dr. Mali, Dr. Anish, Mr. Baldev, and Ms. Gyanvati. I want to thank Dr. Manju Goel, who had so beautifully moderated the
the panel discussion. And I know you are, you have immense talent, and you showed that today. You really effectively coordinated the panel discussion. Thank you so much. I apologize if I missed out anyone, but I really want to, kind of conclude by quoting something that I really feel is very true to explain the relationship that VYK has with Aditi Mahavidyalaya. I want to quote Henry Ford in when he says that coming together is a beginning, staying together is a progress, and working together is success. Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.